Hello and good evening to all. My name is Shalini and I welcome you all in this special virtual book launch event. So friends, आज आप सभी का स्वागत है इस वर्चुअल बुक लॉन्च इवेंट में। प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम सभी एक नए जॉब की तलाश में जुट जाते हैं और नया जॉब ज्वाइन करते हैं। इसमें हम नए एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, नए सीनियर्स के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में एक फैक्टर को अगर हम इग्नोर कर देंगे तो ये हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर है द बॉस। आपका बॉस। आपका बॉस कौन है, कैसा है, कैसे रिस्पॉन्स देता है, कैसे रिएक्ट करता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्किल आप में होनी चाहिए। सो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अपने कॉर्पोरेट करियर में सक्सेस होना है तो आपको अपने बॉस के बारे में, इस स्किल के बारे में जानना ज़रूरी है कि वो आपकी बीच की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। सो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पर बेस्ड एक नई बुक मार्केट में आई है जिसका नाम है द बॉस मंत्रा, लर्न एंड एक्सेल, और जिसके ऑथर है मिस्टर भुवनेश गुप्ता। सो फ्रेंड्स, आज हम इसी बुक को लॉन्च करने वाले हैं, वर्चुअल बुक लॉन्च करने वाले हैं, और जो इस बुक के ऑथर है वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस बुक की जर्नी उनकी कैसी रही, इस बुक के थ्रू वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस को लेकर के उन्होंने इस बुक को लिखा है, रचा है। सो वो हमारे साथ वो शेयर करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपके मन में भी कोई क्वेरी है या आप भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैसेज बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं कमेंट्स लिख करके। सो इससे पहले कि हम आज के ऑथर के साथ डिस्कशन शुरू करें, उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर सकें। सो जिन ऑथर को हमने इनवाइट किया है, ही इज़ अ सर्टिफाइड इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर, बिजनेस कोच एंड अ लाइफ कोच, mindfulness and NLP practitioner, open-minded and focused on changing dynamics of environment. He believes in setting the trends. So without any further delay, मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे आज के ऑथर को, और ऑथर ऑफ द बुक, author of this event, Mr. Bhuvnesh Gupta. Welcome, sir. Welcome to the program. Welcome. A very good evening to all of you. And my greetings to you and all the viewers who are there online, right connected right now. And I pray to God that God grant the magnetism to attract a lot of wealth, a lot of luck, and a lot of money. And Wow. that is how. Thank you so much, sir, आपके डायनामिक वर्ड्स के लिए। सर, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको आज आपका बुक का वर्चुअल बुक लॉन्च होने वाला है? Yeah. Well, Shalini, thank you so much for inviting me, and I'm super elated, excited, thrilled, and of course very highly enthused to be here on this channel. मैं बहुत जी, बहुत खुश हूँ और थोड़ा अचंभित भी हूँ. अच्छा। Just tuning myself into the reality. I think let me hold this book कि ये मैंने ही लिखा है शायद. I don't अरे know. वाह! Somehow I'm still having some goosebumps. जी, जी, And बिल्कुल सर। and and yes, I really took charge of the book, and I could now say that I have boarded the bus of authors community, and a new era unfolds for me now. Thank you so much, Shalini, for the invitation. जी सर, बिल्कुल। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भुवनेश जी की ये फर्स्ट बुक है और ये अमेज़न पर लाइव है अभी इस समय, और ये बेस्ट सेलर का खिताब जीत चुकी है, बेस्ट सेलर का टैग इसके लग चुका है। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशंस, आपकी फर्स्ट बुक और ये बेस्ट सेलर बन चुकी है। सो मेनी Thank मेनी you so much. कांग्रेचुलेशंस। God bless you. Thank you. I'm feeling elated. जी सर। तो सर, आपकी फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक के लिए यही टॉपिक क्यों चूज किया आपने? मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा। Yeah, very pertinent question you have asked. They say for any action, I think the beginning is a thought, and the thought generates an emotion and finally lands up into an action. I remember there was a period in my career, in my corporate journey, when I was stuck for as long as 12 years. I mean, things changed. I mean, the geographies changed, bosses changed, functional areas also changed. But I realized that one thing that remained same was me. So only I was not changing, I was me only.
And that was then a seeding thought got implanted somewhere deep into me, seeking answers as to as many anxieties, questions, I think, which got surfaced in the next few years. And of course, has come out in the form of this book. And all this during these years, I mean, I performed a role of an observer when I used to sit somewhere outside, watch Mhm. myself and a boss, and of course evaluate the role of the boss and experience the importance gaps of understanding of role of boss, and also the impact that has created on my happiness, health, as well as my personal life, not to mention the professional life. Thus the reason to scribble down my learnings, experience, and some research findings in the form of this book. That is how I'm here, Shalini, before you. जी, जी सर, बिल्कुल। सो सर, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? हाउ इज़ योर राइटिंग एक्सपीरियंस? मीन्स ये स्मूथली आपने इसको कंप्लीट किया या कुछ हर्डल्स आए मे बी? ओवरऑल कैसा Oh, रहा? जी बताइए। I think it's a mix of both. As a अच्छा। beginner, the journey was never smooth, of course, हुँ, uh, हुँ। and it has its own ups and downs, which I never knew before embarking upon this journey. Of course, my deepest gratitude to you and your team as well, and who have been a guiding support and always there to help me out wherever I was stuck, to make the life more and journey more smoother and easier. And there were hurdles of different kinds. I was not used to write so much. I हुँ, mean, हुँ। number two, of course, patience. I mean, which is required. It has been my forte. I mean, I believe that I was a very patient individual. I am a very patient individual. It did help me, but again, the changing thoughts and the compilation of thoughts and then putting up into the form of a book was a challenge. And sitting long stints and the family not used to it. I mean, when you're sitting long stints, so I had to just squeeze the tongue from the family, and so some discomfort to them as well as, and vice versa also, because वो भी मेरे को बोलते थे आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ दिया लेकिन still you are on the laptop. what जी, what forces you to be on the laptop? जी, जी। But nevertheless, it's overall a fruitful journey here now, I would say. जी सर। सर, आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कोच हैं और कॉर्पोरेट लाइफ़ को आप बहुत नज़दीक से जानते हैं। तो मैं अगर ये पूछूँ कि एक आइडल बॉस को कैसा एक आइडल बॉस का क्या रोल होना चाहिए अपनी टीम के प्रति, अपनी टीम के लिए? तो आपका क्या कहना होगा इस बारे में? uh, Actually, boss per se, एक कहावत है ना, actually, boss is always right. I mean, we always say this. We have been groomed like that, boss. And not only that, people, boast, I am your boss, हुँ, हुँ, isn't it? हुँ। हुँ, So, but the name per se, it comes with showing power actually. The person who enjoys managing a group of people and by virtue of his position and would like to give orders to employees and behaves as authoritarian, right? And always tries to seek control, always tells his team what to do, what not to do. हुँ, हुँ। So here, I think what a boss is, the ideal boss, I would say, is he should aspire to be a leader. He should transform. He should learn those skills and acquire those skills to be a leader. A leader who basically inspires, who motivates, who supports and encourages the team, basically, and group of individuals to continuously achieve the goals. I mean, it is not that he only can achieve the goals or he can only guide, but he has to take and carry the team along. So that is kind of role is expected from the boss. That is how I say like this. जी। मेरे ख़्याल से बॉस को इतना इन्फ्लुएंस रखना चाहिए अपनी टीम पर कि टीम भी जो है वो कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी हर्डल आ जाए या कुछ भी पूछना हो, तो उसको बेझिझक पूछ सके। इतना कम से कम दोनों के बीच रिलेशन होना चाहिए कि वो बेझिझक उनसे पूछ सकें। आपका क्या Yeah, कहना है इस बारे में? definitely. Actually, बॉस जो है, अगर वो आपका बॉस वाला करेक्टर अपनाता है, रोल अपनाता है, तो व्हाट ही डज इज वो अपने सबॉर्डिनेट्स को मतलब एम्प्लॉयज बोलेगा, एंड आई वुड से इफ ही इज ए लीडर इन फैक्ट, तो ही विल हैव फॉलोअर्स। आई मीन, उसको कहीं इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, तो ही विल बी पीपल ओरिएंटेड एक्चुअली, एंड ही इज नॉट गोइंग टू बी प्रॉफिट ओरिएंटेड। नो मोर, नो, टॉप ऑफ दैट,
He has a habit. He has to cultivate a habit of collaboration. He has to cultivate a habit of innovation, seeking commitment rather than controlling it. Actually, and a leader, a boss, if he transforms into a leader, basically is a visionary then, and it then goes for delegating the tasks and responsibilities, and not only tasks and responsibilities but authorities as well. That is very important. And another one important thing which I found is bosses normally say, when something goes wrong, a mistake happens, say who is wrong. They blame, they point the finger, who is wrong. Whereas the Mm-hmm. leader, he just fixes it and shows what is wrong. So that is the difference, who and what, right? So that is how a boss is always talking one way, more or less. But leader is a person who listens also. He listens. He's a listener. So होता क्या है कि bosses जो है they cause nervousness, I would say. People used to fear and feel discouraged to even come to office, and Mm-hmm. he uses fear as a tool to impress upon and get the work done. Leaders, they in otherwise they are other way around. I mean, they inspire confidence, create a safe space, and nurture them. So any good leader, I would say, any good leader can be a boss, but not every boss is a good leader. So this role is something you embrace mentally and emotionally that inspires your company and employees to greater heights, I would say. जी, जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बॉस होना अलग बात है और लीडर होना अलग बात है। दोनों को हम सेम लेवल पर या सेम प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं रख सकते हैं। लीडर अपना Hmm. वर्क करता है, बॉस अपना वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार दोबारा से रिमाइंड करवा दूँ कि आज हम एक जो लोग हमसे अभी नए जुड़े हैं, आज हम एक वर्चुअल बुक लॉन्च करने जा रहे हैं। इस बुक का नाम है द बॉस मंत्रा और इस बुक के जो ऑथर है वो है मिस्टर भुवनेश गुप्ता। ये बुक अमेज़न पर अवेलेबल है, अमेज़न पर लाइव है इस समय और आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। साथ-साथ में ये अमेज़न पर बेस्ट सेलर का खिताब भी जीत चुकी है, बेस्ट सेलर का टैग ले चुकी है। सो इसी बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं खुद ऑथर से। सो सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, काफ़ी अलग-अलग तरह के सिनेरियोज़ होते हैं। कोई एक ऐसा कॉमन इश्यू आपके सामने आया हो जो सब ऑफिसेज़ में आपको लगता है कि ये इश्यू तो आता ही आता है? No, it is difficult to find only one issue basically. अच्छा। It's a gamut of issues basically. You can only club it two ways basically. Either they are negative or there are positive issues, right? If I mean, to summarize, I mean, if I take negative ones, they're like conflicts. I mean, difference of opinions, some pseudo fights to impress upon the boss, हुँ, हुँ। biases, complaints, grapevine, jealousies, winning, backstabbing, gossip. They are some of the negative ones actually. Sometimes blame games as well. ये उसने किया, ये उसने नहीं किया, ये मेरा रोल नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये आपने उसको ज्यादा दिया है, मेरे को कम दिया है. So these kind of things are, of course, the negative connotation as far as the office issues are concerned. Of course, positivity, yes. You understand the team collaboration, delegation, recognition, and a person learns and grows here. So that is another aspect of being in office, part of a team. So that is how I envisage basically, and summarize the issues here in the जी, corporate जी। world. सो सर, आप ने कई सारे वर्क कर रहे हैं, अलग-अलग ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, अलग-अलग कोचिंग का वर्क कर रहे हैं। कई लोगों से आपको मिलना होता है, बिज़ी शेड्यूल रहता है। सर, इतने बिज़ी शेड्यूल के अंदर बुक लिखने के लिए टाइम कैसे निकाला आपने? See, I told you earlier. Actually, there were some many burning thoughts within me. I mean, I mean, uh, I used to write bits and pieces actually, but never was able to put it in a sequence. जी, But जी। for the last 2 years, when I stepped out of the corporate world, I had some time to spend uh, sitting and watching from outside. And then, of course, I could get a series of thoughts developed, and I could list down the anxieties which anybody who is a new joiner, anybody who's in a middle management, anybody who's in senior management, at every level. See, the boss is there at every level, even if I go into my second innings. Now my wife is my boss. It is the challenge. The second book probably goes to it. Then what is एग्ज़ैक्टली, how to एग्ज़ैक्टली। how to deal? That is a bigger boss. So, but of course, these last 2 years, I mean, especially last one year,
I was able to channelize my thoughts to scribble down in a sequence, and of course the process started. And of course, started developing interactions with you people also. It was a motivation talking to you, and of course I wasn't having a direction. And slowly and slowly, I picked up the pieces and combined them with God's grace and with all the blessings of all my nears and dear ones and my friends. I'm able to put in book before you. जी, सर, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये आई एम श्योर मोस्ट ऑफ पीपल अपने आप से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि कई लोग जो है वो इसको जॉइन करने की तैयारी में हैं। बहुत से लोग जो है वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें। सो आई एम श्योर जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं या आपने जो बुक में अलग-अलग पॉइंट्स बताए हैं, वो सभी हमारे से रिलेटेड हैं। हम सभी इससे रिलेट कर सकते हैं। सो आई एम Yeah. श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा इन सब इस डिस्कशन के अंदर, और काफ़ी सारे कमेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेकर के, तो हमारे सामने एक एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट पर्सन बैठे हुए हैं, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं और भुवनेश जी को बहुत खुशी होगी, वो आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सर, एक और सिनेरियो के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ कि एज अ टीम जब हमें कोई काम मिलता है, तो सारी टीम मेंबर्स उस काम को करने में लग जाते हैं, चाहे कोई छोटा काम करे, कोई बड़ा काम करे, सभी अपनी अपनी एनर्जी जो है उस काम को देते हैं। फिर एक बार जब वो काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, तो जो बॉस की एप्रिसिएशन है वो सिर्फ उसी बंदे को मिलती है जो टीम लीड कर रहा होता है। तो जो अदर बचे हुए जो मेंबर्स हैं जिन्होंने बराबर मेहनत की है, क्या वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बॉस का एप्रिसिएशन हमें भी मिले? आपका क्या कहना है इस No, बारे में? I think I 100% agree with you as well, of course. See, think of Kapil Dev, think of 83 World Cup team, जी। isn't it? It's an example, right? Who should hold the trophy? Why not Kapil Dev, right? See a हुँ, king who is going to fight a battle or is fighting a battle, right? He's taking charge of the whole, I mean, I would say the whole soldier, the whole group of, his team. He's in charge of the whole team. हुँ, हुँ, Why not? A leader, he takes the ownership here, ownership of success and failure both. And he succeeds or fails, has a huge impact on his future existence. एक लीडर जो है जब फेल होता है तो वो बहुत ऊपर से नीचे गिर जाता है। और बॉस जो होता है, जो लीडर होता है, फाइनली ही हैज अ वेरी बिग रोल टू परफॉर्म, एंड व्हेन ही इज stepping forward to accept it and taking that role. And हुँ, as हुँ, per the hierarchy, that is why the top management and the senior management sets up a hierarchy basically. They cannot deal with each individual. They deal with capable people who have the expertise, who have the experience to deal with situations, who has the temperament to deal with situations, right? They who knows how to deal with the environment and take care of the system as well. So those kind of capabilities, if somebody comes up with, of course, yes, it's important. One should now recognize the player of the tournament also, player of the match, right? There हुँ, are ways to do it. For example, if some boss performs the best, say all over India, he is recognized by the chairman. Okay, he is called to the chairman office or in some forum or in some big function. He is honored, he is recognized, he is rewarded. Now, coming back, the leader comes back to his own place, now the idea is then he should go into his celebration of that reward, and pass it on. And maybe in that meeting, you should call all his seniors also and get, recognition to the all those people who have done wonders. I mean, who have outscored actually. There may जी, be 5 people who has performed out of 10. There are 2 people who have performed extraordinarily well. Why not to give a special recognition before the management as a player of, the employee of the team or whatever you call it, the best team manager or whatever you say it, recognize it. It's important. Recognition at every level is important. Everybody wants to be recognized, everybody wants to be rewarded, but yes, commensurated to its efforts. It should be known to the team that if you put in efforts, they will be recognized. It's not that okay, you or just do the Pareto principle 80-20, 20%, 20% people are working and result 80% they are silent. Won't make हुँ, a
team basically. So the team, the performer needs to be rewarded. Yes, individually, but of course in different forums. I mean, Mhm. it is not that. That is how I say why boss should not be. I mean, then it is the prerogative of the boss that मैं ट्रॉफी लेके आया हूँ, अब आप ये ट्रॉफी किसी को भी, आप सभी आपने अपने हाथ में लेके फोटो खिंचाइए उसको. Why not? I mean, Mhm. it is of course a privilege of boss to take the honors. I would definitely say like this. जी, क्योंकि सबका इक्वल एफर्ट लगा है उसमें। आई थिंक बॉस ने कमांड दे दी है, लेकिन जो हार्ड वर्क किया है, जो जो माइंड चला है, वो टीम का चला है। आई थिंक उनको पूरा एप्रिसिएशन मिलना चाहिए और एक-एक मेंबर को इंडिविजुअल मिलना चाहिए, आई थिंक सो। जी, भूमि जी, हमारे साथ एक एक ऑडियंस में एक व्यूअर जुड़े हैं, सागर गोयल, जो आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। ही इज़ आस्किंग, हाउ वाज़ योर रिलेशन विद योर बॉस? प्लीज़ शेयर अ फ्यू इंसिडेंट्स। सो आप इस क्वेश्चन Actually, का आंसर देना चाहेंगे? I had not only one boss, I had a number of bosses. I would say a series of bosses. अच्छा। And I mean, to tell you very frankly, I learned from each of them. I हुँ, mean, हुँ। I had been a learner and I respect and I owe whatever I am today to all my bosses. I mean, I'll to start with. I mean, the first thing I learned when I joined my organization. I हुँ, mean, हुँ। all oldies, my old bosses, senior bosses, they used to remember my name even after years of अरे वाह! meeting. I mean, that was something very interesting. I mean, they had that sharp memory. I mean, जी, and it is difficult to do it. Like many a times, I found my bosses, they used to remember even my spouse's name also. ओके। And so yeah, so if that is the I mean, the spirit and the involvement, and that is the kind of memory and the kind of listening skills they possessed, I think, and to active listening, I really I feel privileged to be here. Actually, I mean, though there are skills to be mastered, and in my incipient stage, I learned those skills from them. And I think whatever I am today, I owe it to all my leaders in the past. जी सर, बिल्कुल। बॉसेस से जैसा आप बता रहे हैं कि हमें बहुत सीखने को मिलता है, लर्निंग्स बहुत मिलती है। उनका एक्सपीरियंस हमसे काफ़ी ज़्यादा होता है और शायद चीज़ों को टैकल करने का तरीका उनका अलग होता है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। सर, आपने अपनी बुक में एक चैप्टर लिखा है, दिस इज़ बॉस मैनेजमेंट। सो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि कैन वी रियली मैनेज आवर बॉस एंड इफ यस देन हाउ सर? प्लीज़ टेल अस। Yeah. Actually, normally ना what will happen, ऐसा बोला जाता है कि when we think of managing, we tend to only think of managing subordinates, you know. But the truth is, you have to manage in every direction, you know, up, down, side by side, both. And managing up can sound like how to manipulate your boss, but that's not really at all. हुँ, हुँ। Whenever you are trying to build a positive, productive relationship with anybody, you have to look at it from her or his point of view. And that's particularly true when your boss, because your boss does control a lot of things that affect you at work, isn't it? So, I mean, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि even you are not only working from him basically. I mean, you need to basically find out ways. I mean, how to manage it. I mean, when to share with you, you need to accept the way your boss is. अगर आपका बॉस आपकी मर्जी से नहीं आता है, हुँ, राइट, हुँ। आप अपनी मर्जी से अपना बॉस नहीं लेके आते हैं. ओके, आपको बॉस एक मिलता है, आपको उसके साथ में काम करना है. So you need to first accept the fact that your boss is your boss. That is very important. That he's been uh, given the responsibility to manage a team. So that is the first thing. Second is हुँ, prove that you are trustworthy and dependable too. That's very important, you know. And because that is how you manage your boss. I mean, he should find your boss is not everywhere. He हुँ, should हुँ। find value in you. I mean, you are one of his eyes and ears on the ground, you know. And if you have the information about something good, share it. If it's bad news, even then you need to go take the courage and tell it. And tell your boss that you just alone cannot put the fire alone. And this is very, very important. And most of the times we see people are complaining. So I request you, don't complain about your boss with others. बहुत बार ऐसा देखा जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर. I mean, people start complaining about their boss to
here, there, and everywhere. I mean, Mhm. as if it whether it goes noticed or it doesn't go it's unnoticed. I think you must remember that you never know when the person you think is on your side, commiserating, but the boss will turn on you. Keep your eye on the big picture, and Mhm. one needs to keep the mouth shut in such case. One should not whine always. I mean, normally क्या होता है कि आदमी कंप्लेंट करता ही जाता है, राइट? आप Hmm. सोचिए कि अगर आपके पास आप घर आते हैं, योर स्पाउस और किड्स दे whine at you, nobody likes, right? So boss is also like that. He doesn't like you always find complaining and complaining and complaining. And Right. another thing is, look at the situation from your boss's point of view. आप बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचिए, राइट? Exactly. आप अपने पॉइंट ऑफ, आप तो कह रहे हैं कि sitting in your cubicle, it's easy to sing me song and stew in what you are and not getting. I mean, who's getting more? But very important, you need to understand what he's or her is undergoing. अब ये देखिए, बॉस बॉस का टू डू लिस्ट क्या होता है, उसका तो डू और डाई लिस्ट होता है, राइट? आपका Mhm. टू डू लिस्ट होगा, लेकिन जो बॉस होता है उसका तो डू और डाई लिस्ट होता है, Oh my God. राइट? और मैंने ये कॉइन किया है। आई मीन वेरी जी। वेरी, बिकॉज मैं एज ए बॉस जब रहा हूँ, लीडरशिप पोजीशन में रहा था, तो मेरे को अभी भी याद है वो कांटों का ताज पहनने जैसा होता है, राइट? अच्छा। आप आप मेरे को कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं उस सीट से उठ के सोफा पे जाके सामने वहां बैठ के काम कर लूं, हुँ। राइट? सो एक, बिकॉज वंस यू गेट आउट ऑफ द चेयर, यू feel different actually. Once you get into the chair, things are different, right? जी। So how it matters depends. Now once you own it, and then you are responsible and accountable for that thing. एग्ज़ैक्टली And सर। treat your boss with respect. It is important, because if a person takes charge of your good or bad deeds, he should be given the due respect. That's very important. जी और सर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉस के मैनेजमेंट का स्टाइल पता होना चाहिए आपको। आपको पता हुँ। होना चाहिए कि बॉस का स्टाइल कैसा है, उसको क्या चीज पसंद है। मतलब वेदर ही वांट्स डिटेलिंग, वेदर ही वांट्स क्रिस्प समरीज, और आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड हिज स्टाइल। किस चीज पे उसको राइट। गुस्सा आता है, क्या चीज नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस ऑफ द बॉस। दैट इज इंपॉर्टेंट। Try to बिल्कुल। make your boss look good. I think it's very important. Why not do it? Try to make your boss job easier. आप अगर टीम के अच्छे मेंबर हैं, तो उसका काम आसान करिए ना, उसका काम मुश्किल क्यों करते हैं? He is already under stress. He is already under stress, right? So make his life easier. It's very important. You feel that your presence has helped the boss to discharge his duty good. And always whatever you do, put your keep your boss in the loop. Your boss should know what you are doing. I mean, बॉस को 10 ऑफिसर्स को देखना, 25 लोगों को देखना है, लेकिन अगर वो हर एक के पीछे पीछे जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वट एवर यू डू, आई थिंक कीप योर बॉस पोस्टेड एंड अपडेटेड ऑन वट एवर यू डू। जी। And another ठीक है। thing is, always appreciate your boss. At least give some sincere appreciation. उसको बहुत जगह से गाली भी मिलता होगा, उसको बहुत जगह से दुत्कार भी मिलता होगा. He doesn't come and pass it on to you, right? He can't share with you also. He lives in silos. Bosses, leaders, they live in silos, I mean, they're in isolation. They need somebody to appreciate. They need somebody to come close and understand their situation, and probably think about them. And another thing is, offer solutions, not problems. आप बॉस के पास जाते हैं, प्रॉब्लम्स लेके ही जाएंगे, तो who will find solutions then? There needs to be an effort. At least try your bit to come close to a solution and go and discuss with him. Even if you have 5 or 6 solutions, why not to go and talk to him and share, sir, these are 7 solutions I've got. Of course, you being experienced one, seasoned one, find out what is the best in the given scenario. So he हुँ। will find easy working on those things, right? And must do homework before going to him. That is one way एग्ज़ैक्टली। of managing your boss. Exactly. आप एग्ज़ैक्टली। कुछ काम का तैयारी करे बिना, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाए बिना, और कुछ
आधा अधूरा लेके जाएंगे तो आप चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, आई थिंक, बिकॉज you yourself would be caught in the web. Then I think that's very important. Your boss will have an impression made of you कि आप क्या काम करके लाए हैं, and go with a clear objective, आप क्या चाहते हैं actually. It's important. Another thing is never ever get afraid to ask for help. जब भी बॉस से हेल्प मांगना है तो जरूर मांगिए, जी, जरूरी है, राइट? ही इज दिस इज देयर टू इम्पोर्टेंट। ऑफर यू हेल्प। यस, यस। उसको उसको हेल्प देने में बहुत अच्छा लगेगा। टूट योर ओन हॉर्न, ये मैं बहुत बिलीव करता हूँ एक्चुअली। आपको अपनी तूती खुद बोलनी पड़ेगी। Or I think if you don't tell your boss about your accomplishments, who will? Who will? I mean, remember, you are thinking about one employee. You and your boss has a whole lot of employees to think about, you know. या। So periodically, I think make sure that you let him or her know about your accomplishments and any great feedback you have received. Bosses, जो है, I mean, they are really worried for you. It's not that they are not worried for you. And ask for honest feedback about you. I mean, it's important to take feedback. Whatever you do, always take feedback from them. It's very, very important. So these are the things, the ways which I've enumerated, basically the ways you can manage your boss, I would say. So जी this is सर। what I mean about writing that piece, actually. Yes. जी सर। सर आई मस्ट से कि आपने सारे बॉसेस के बिहाफ में जो मन की बात थी वो बिल्कुल क्लियरली बता दी है कि एक बॉस रियल में क्या सोचता है और एक एम्प्लॉयी से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में आई थिंक सारे पॉइंट्स आपने कवर कर लिए इस चीज़ में कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या चाहता है एम्प्लॉयी से और वो हेल्प करने के लिए रेडी है, वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी है। बट आप एक बार आइए उसके पास, अपनी प्रॉब्लम बताइए और साथ में थोड़े से खुद मैनेज होकर के आइए, तभी आप बॉस को मैनेज कर पाएँगे, राइट सर? Yeah, yeah. सर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारी एक ऑडियंस ने पूछा है, इनका नाम है संजीव गुप्ता। ये पूछ रहे हैं, हाउ इज़ योर पॉजिटिव बुक सॉरी ये हाउ टू मैनेज अ बॉस हू इज़ मच जूनियर एंड लेस एक्सपीरियंस्ड देन यू? Ah, yeah, very. I think this I have also covered in my book. It's a very, very important thing. Sometimes your peer becomes your boss. Many a times your juniors become your boss. ये जी। आप क्रिकेट टीम को देख लीजिए ना, राइट? धोनी साहब बॉस थे, राइट? और धोनी साहब ने, I mean, उसके बाद विराट कोहली कैप्टन बने। कोहली जो अब रोहित शर्मा के अंडर कैप्टनसी में खेल रहे हैं। हुँ। See, what I say is, I think leadership, I mean, or boss, if you say, I mean, if there are 20 people, 10 people performing, not everybody can get the race. Not everybody can be a leader. Not everybody can be a boss. जी, One needs to outperform. One needs to outperform and has a set of agenda close to the vision of the company and the organization, and needs to be a proactive person who is always moving ahead, uh, to be taking on the newer responsibilities, newer challenges without any expectations. Actually, if you do the work and start building up that portfolio, where you start ending up generating a lot of work for yourself and getting recognition, and I mean, try to you get the opportunity to project also, I think. And by virtue of your those projections and capabilities and skills, of course, there जी, may be a chance, there are chances, every chance is there that a person who is a senior may not have that capability or capacity or skills. Basically, there would be a junior person who possess those skills, those capabilities, एग्ज़ैक्टली। the ownership, level of ownership. And why not? He is given and given a opportunity, he will do very good. I mean, why हुँ, not? I mean, it is something. It is something like that. You put forward a person to take charge of a situation, right? So it's a temperament. I mean, you try it out. I mean, many times people fail also. Many times people succeed also. But that is how you leaders are grown. Actually, it's a succession ladder. You need to build the ladder. Not everybody can be a leader. Not everybody can be a boss. A boss has to be a leader. So in my this thing, I think one needs to have that capability, and organizations, they always look for such kind of people, build up the ladder for such people so that they can climb
at the right intervals without any hiccups and impediments, जी, and grow at the required speed to take on the higher challenges, because once you go at the highest level, so there is a different world actually, and there your thinking, your strategies, your mindset, it has to be totally different one, it has to go out of the bound basically to once you need to manage the big shows, so big companies. जी सर। सर ऑफ़िसेज़ के अंदर बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, वो सबके लिए होती हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो इस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो टैलेंटेड होने के बाद भी मिस कर जाते हैं इन चीज़ों को। तो ऐसी सिचुएशन में अपने बॉस को अपनी वर्थ कैसे प्रूव करें हम? Yeah, it's a very big question actually. It's a very big question. And ये जो आप बोल रहे हैं, ये सवाल जो आपने पूछा है, जब अपनी वर्थ अपने बॉस को बताते हैं ना, तो वो बॉस सिर्फ अपने तक ही वो रख नहीं पाता है, एक्चुअली उसको आगे भी बताना पड़ता है, बिकॉज ही इज ऑल्सो रिपोर्टिंग टू ए बॉस, राइट? जी, तो ये एक चेन है, वो जो चेन है बेसिकली, वो जो आप वर्थ बताना शुरू करते हैं, देन इट एक्सपैंड्स बेसिकली एंड स्टार्ट्स ग्रोइंग. So it's important actually whenever you have expertise or mastery over a particular skill, I think it always carry a value. हुँ, And हुँ। if you become excellent at what you currently do, the other people around you will start taking notice of that. अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं, तो दूसरे लोग जरूर उसको नोटिस करते हैं. And many of times they start seeking help from you and start following you also, right? Because जो जी, चीज आप अच्छे से कर सकते हैं, suppose negotiation skills हैं आपके अंदर बहुत गजब के हैं, हुँ, when हुँ। you have mastered those skills, and why not whenever there is a negotiation important happening, I mean, people would send you because they need to crack a deal. That's important for the business. So there एग्ज़ैक्टली, you play a role and you outsmart the others basically because of that particular skill. And these are the things, actually, few things which speak louder than the excellence at one's forte. Skill and craft. It's important. I think it's some technique where you need to work on this, हुँ, and हुँ। you need to be a popular leader and could find ways into minds of people who matters. मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपनी वर्थ प्रूव करनी है, तो उसके लिए यू हैव टू फाइंड सम वे टू गेट इनटू द माइंड ऑफ योर बॉस. इट्स important. The person who matters, maybe the boss's boss. So my piece of advice is as under, I would say, work hard to become an expert, at your skill or craft. It's very important. You hone your skills, very very important. Learn your skill today. If you are unskilled in something, if you lacking something, please do something to hone your skill. Ask your boss that I need to be put to or sent to this kind of training, or I think go for yourself, learn yourself and master this skill. And what the best time to plant a tree was 20 years ago, and the second best time is today at this moment. आपने जी, पेड़ 20 साल पहले लगाया, तभी तो आज फल खा पाएंगे आप. और दूसरा एग्ज़ैक्ट दूसरा बेहतरीन समय क्या है, जब 20 साल पहले आपने फल नहीं खाया और पेड़ नहीं लगाया, तो आज लगाइए ना. हुँ, अगर आज लगाएंगे तो हो सकता है 20 साल बाद चेयरमैन साहब बन जाएंगे, और वो आप सोचेंगे कि हाँ, ये मैंने स्किल सीखी, तो मेरे जी, को 20 साल बाद ये फल मिला. कोई तो बिगनिंग करनी पड़ेगी जहां से अपने आप को आपको आउटस्मार्ट करने के लिए, अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए दूसरों से बेहतर स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. दिस इज, ट्रू एंड सर, ट्रू। नॉट ओनली दैट, स्किल तो हासिल कर ली, लेकिन दूसरों को इसके बारे में मालूम नहीं है, फिर भी जी, आप हेल्पलेस हो. I हुँ, think the moment you attain a degree of proficiency, just take the cue and opportunity to talk to your craft, to the people who matter. जैसे ही आप वो स्किल एक्वायर करते हैं, तो उसको शोकेस करिए, उसको एक्सपीरियंस करिए, उसको आप लोग जो मैटर करते हैं उनके पास पहुंचाइए. उनको पता लगना चाहिए कि yes, you have acquired this skill and you are capable to do and handle such kind of skilled jobs now. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट नाउ बिकॉज अगर आप ये अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे. दिस इज इम्पॉर्टेंट.
So, and Exactly. then you need to practice your skill today also. आपने स्किल हासिल तो कर ली, लेकिन स्किल को प्रैक्टिस नहीं किया. Hmm. अगर आपने कोई चीज हासिल कर ली और उसको प्रैक्टिस नहीं किया, तो बहुत मुसीबत हो जाएगा. आप उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे. एक्चुअली इट्स Hmm. इम्पॉर्टेंट. The only way to improve and master skill is to practice. This is and I think inside and out, I would say this is a very very important mantra uh, for a person who wants to grow up in the ladder and wants to prove the worth to the boss and the management. Grab the opportunity to do things which others don't. Being excellent in your current role will make you a valuable asset to team, but to make yourself an expert, you are going to take some time. So, कैसे वर्थ इंप्रूव करेंगे? टेक ऑन द जॉब्स विच अदर्स वांट, इवन इफ दे आर बियॉन्ड योर एरिया ऑफ स्किल और आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन को छोड़ के कुछ ऐसा काम करिए और जिससे कि दूसरों को पता लगे कि आप ये भी कर सकते हैं. Such things, they automatically draw attention and gain respect of your bosses, team and top leadership more quickly as compared to someone with whatever it takes attitude. It's important. क्योंकि अगर जब ये चीज आप करने लगते हैं तो इट गेट्स नोटिस. इट्स इम्पॉर्टेंट. Another thing which comes to my mind is uh, uh, can you take tough jobs? Try to get hold of tough jobs which other people say कि ये मैं नहीं कर सकता. Mm-hmm. ये aspire and take off the task which is difficult. Try accomplishing those tough jobs, those tough tasks actually, because that is how you get appreciation. जो सब नहीं कर सकते आप कर सकते हैं. आपने अटेम्प्ट तो किया, फेल हो जाएंगे क्या बात है, लेकिन अटेम्प्ट तो किया. दिस इज नोटिस्ड. पीपल टेक चार्ज ऑफ इट. जो आगे बढ़ता है वो ही रिस्क लेता है, जो रिस्क लेता है वो आगे बढ़ता है. इट्स इंपॉर्टेंट. सो बी रेडी टू लर्न एंड ग्रो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, जो मैंने पहले भी बताया आपको. Mm-hmm. जी. एंड लर्न टू डील विद डिफिकल्ट पीपल सक्सेसफुली. आपको जिंदगी में सब एक जैसे लोग नहीं मिलेंगे. आपको बहुत अलग अलग तरह से दुनिया मिलेगी. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ हजारों लोग काम करते हैं, हजारों डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट माइंडसेट होते हैं उनके, डिफरेंट अपब्रिंगिंग होती है उनकी. And it is very important how you deal with all those people and how you get up to the top of the ladder dealing with those people. This itself is a skill you need to master. It is always advisable that you need to put people first, then yourself, and do learn to put yourself on the line. You don't have the right to put the organization at risk, nor you have to put others at risk also. ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को सेव करने लग जाएं. आप तो बहुत स्मार्ट खेलना शुरू कर दें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क पे डाल दें. Mm-hmm. आप अपने साथियों को रिस्क पे डाल दें. राइट. जी. एंड इफ यू, वो रिस्क मेरे हिसाब से क्या है, इफ यू स्टार्ट टू टेक रिस्क ऑन योरसेल्फ, एंड that is a big thing basically in the corporate world, because the person who owns the mistakes, a person who owns risks as well as successes, is bound to rise. This is the first important mantra in the backyard of development. This I would definitely recommend. Accept mistakes. गलती होती है तो मानना बहुत जरूरी है अगर अपनी वर्थ प्रूव करनी है तो. गलती जी. वही करता है जो काम करता है. अगर काम जी. नहीं करेंगे तो गलती कहाँ से कर देंगे आप. तो Exactly. ये बहुत जरूरी है. काम करिए, गलती होगा आपसे, 3 बार होगा, 4 बार होगा, लेकिन बॉस को भी नजर आएगा कि आपने अटेम्प्ट तो किया है. गलती हो गया, हो सकता है इसकी गलती ना हो, किसी और कारण से गलती से हो गया, तो ही विल टेक नोटिस ऑफ दिस एक्चुअली, एंड आपकी वर्थ इंप्रूव होगी, कम नहीं होगी. प्रॉम्प्ट हेल्प करिए एक दूसरे की. टेक लीड. अपनी दूसरे के जितने साथी हैं उनकी मदद करिए. ऑलवेज विद द फर्स्ट पर्सन टू रश फॉर हेल्प ऑफ अदर्स. Mm-hmm. आपको जी. अगर एक्सेल आता है, आपको पावर पॉइंट आता है, आपको कोई खास चीज आती है, दूसरे Mm-hmm. आपके साथी को वो चीज नहीं आती है, व्हाई डोंट यू गो एंड हेल्प हिम आउट. अगर आप उसके पूछ के या उसको, अगर वो आपसे मांगता है हेल्प, आपको हेल्प करते हैं, वो एक अलग चीज है.
आप पहचानते हैं कि उसके अंदर ये मादा नहीं है, ये चीज कमजोर है, इसको मैं थोड़ी सपोर्ट करके आगे ले जा सकता हूँ टीम को, डू इट। हम्म। इट हम्म। आल्सो गेट्स नोटिस। एक पहले तो आपने उस एम्प्लॉय का दिल जीत लिया जिसकी आपने हम्म। मदद की, उसकी जी। कमी को पूरा कर दिया। और दूसरा बॉस का दिल जीत लिया कि बॉस को लगा कि आपने अपना ही नहीं दूसरे का काम भी सपोर्ट किया। एग्जैक्ट। तो जी। आपकी वर्थ क्यों नहीं बढ़ेगी? आपकी वर्थ उस एम्प्लॉय से तो ज्यादा हो गई ना, बिकॉज जिस एम्प्लॉय ने जो करना था 75%, आपने 125% करके कंपनी को दिया है ना। सो दैट इज हाउ यू इंक्रीज योर वर्थ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी रिस्पॉन्सिबल एंड परफॉर्म टास्क दैट आर बियॉन्ड योर जॉब डिस्क्रिप्शन। ये मत बोलिए कि ये मेरा काम नहीं है। बहुत बार मैंने ये देखा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पीपल हम्म। टेक चार्ज ऑफ देयर ओन वर्क, यू नो। आई मीन पीपल हम्म। से दिस इज, देयर इज ए, कहते हैं ना, एक ड्यूटी लिस्ट बन जाती है, ये एक जॉब डिस्क्रिप्शन बन जाता है, या आपका कुछ एक चार्ट बन जाता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये अथॉरिटीज हैं, ये सब। एंड मोर और लेस वेरी मैनी टाइम्स यू सी बॉस आता है आपके पास, सर ये तो मेरा काम नहीं, ये तो उसका काम है। वो उसके हम्म। पास जाता है, कहता है ये मेरा काम नहीं, तो बॉस यही सोचता है ये काम किसका है फिर? ये हम्म। तो मेरी टीम का ही काम है ना, किसी को तो करना है। एंड इफ द पीपल स्टार्ट पासिंग ऑन द बक एंड डेवलप दिस हैबिट, एंड हम्म। आपके सब टीम मेंबर्स अगर वो करते हैं एंड यू आर आल्सो पार्ट ऑफ इट, then I think you are proving your some not worth something else to the bosses actually. So जी। you need to be responsible and perform tasks that are beyond your job description. तो ये बोले की जरूरत नहीं है कि सर ये मेरा काम नहीं है, नहीं सर ये दीजिए, बहुत जरूरी है एक टीम के लिए, लेट अस डू इट। और अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी की बाहर की मदद दीजिए, कैसे भी करके उसको करके देना है। तो जब ये स्पिरिट होती है तो बॉस कहता है बस ठीक है, यू हैव द वर्थ टू डू इट, व्हाई नॉट टू प्रमोट यू। तो प्रमोशन का जब समय आता है तो ऐसे लोगों को दूसरों से पहले प्रमोशन जल्दी मिलता है, राइट। जो सवाल बिल्कुल। पूछा संजीव गुप्ता जी ने, आई थिंक उसका आंसर यहाँ से भी आता है कि अगर आप अपनी वर्थ प्रूव करते करते ये भी बोलते हैं कि सर ये काम, सब काम हमारा है, अगर बॉस का काम है तो मेरा काम तो हो ही गया ना। बॉस एग्जैक्टली। का काम है, अगर बॉस मेरे पास कुछ काम लाया तो मीन दो टीम का काम है। और अगर वो मेरे पास आए तो शायद मेरे में कुछ खास देखा होगा उन्होंने, मेरी कुछ खास काबिलियत देखी होगी जिसके कारण वो मेरे पास आए हैं। व्हाई नॉट टू एग्जीक्यूट दैट एंड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी टू शोकेस माय स्किल, जी। and then how that is how you show your worth. So that is at what Shalini I would say on this. जी सर, कॉर्पोरेट में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कॉर्पोरेट के अंदर कितनी पॉलिटिक्स चलती है और कितनी ओहो। जेन्युइनिटी सर, इसमें इसके ऊपर आप थोड़ी लाइट डालिए कि क्या कहना है आपका इसके बारे में। कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स, yes, to tell you very frankly, I'm going to be very upfront now, right? जी। uh, See, it is prevalent and ranging from little to grave, depending upon the quality of people and the quality of culture of the organization, and it varies accordingly. I think we need to go deeper into it to understand, because this is something which is a driving force actually in building up a culture of an organization, right? And this politics, एक ना सेइंग है, मैं ये मैंने कॉइन की है somehow, I mean I would like to share with these people. जी। uh, Great people talk about ideas. What I say is great people talk about ideas and average people talk about themselves, हम्म। but and small people talk about other people. A person who gossips always talk about other people, you know. They हम्म। focus on only what they know. They focus what they say. They take shortcuts, right? जी। They do whatever is popular. They don't do everything. They do only those things which are popular. And they maintain dual standards, you know, the people who are into politics. And they somehow they're ruled by their desire to get ahead, then desire to achieve excellence. उनकी ये कोशिश होती है हम एक दूसरे से उससे आगे निकल जाए या उसको आगे ना निकलने दें। जी। ये ऐसे वो लोग होते हैं जैसे वो मेढक जो वो स्टोरी आता है ना कि वो टांग खींचते नीचे कि मैं तो डूबूंगा, तुम्हें भी ले डूबूंगा, या
जो कढ़ाई में अगर मेढक डाल दिए तो वो एक दूसरे की टांग खींचते हैं बाहर निकलने के लिए, right? हम्म। Somehow, I mean, dangerous thing actually. They are ruled by the desire to get ahead rather than desire to achieve excellence, productivity, teamwork, or consistency. And another thing is, whatever values or skills they possess, they are secondary to their ambition. They sometimes do appear to get ahead, but these gains are always temporary. ऐसा भी होता है कि ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं बहुत बार, बट जो गेंस मेरे हिसाब से मैंने महसूस करता हूँ ये टेम्परेरी होते हैं. इन द लॉन्ग रन इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी, प्रोडक्टिविटी ऑलवेज पेज. एंड ये हमेशा होता है जो आदमी टीम कॉन्शियस होता है और टीम वर्क में बिलीव करता है, ही ऑलवेज गेन्स, यू नो. एंड but there are some work environments which seem to draw people towards political behavior. We need to avoid it actually. It's very, very dangerous, and always we need to say to gossip, no to gossip, I think, and petty arguments. It's very, very, very important. It's a damaging thing for any company, I would say. And I think there is no upside of gossip. It diminishes the person who is talked about. It also diminishes the person who is trying and saying all shoddy and wrong things about others. And to that extent also damages the person who listens to it, I would say. अब मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे ला रहे हैं, दूसरे को बारे में गलत बोल रहे हैं और तीसरा आदमी सुन रहा है, if he is allowing that to happen, I think he's building up a culture then, because he is also responsible and he also damages the person who is listening. So जी it's a useless culture actually, damaging. I mean, I have also experienced जी this, but as a leader, at least I did it, reprimanded one person for this, and but this is something not a sign of maturity, and one should avoid it actually, तो सर because जेन्युइनिटी भी है अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं, जेन्युइनली हेल्प नहीं नहीं, करते हैं। बहुत सारे लोग जेन्युइन हैं, बहुत ज्यादा लोग जेन्युइन हैं. दैट इज व्हाई द कॉर्पोरेट्स आर ग्रोइंग एंड मूविंग. I जी mean, but सस्टेन there कर is पा a रहा है। there see people are from different backgrounds. I mean, there are many people who have their own kind of a pseudo image. I told ना कि जो तीन तरह की दुनिया बताई ना मैंने आपको, उसको तीन भाग में बांटा है. ग्रेट पीपल, दे टॉक अबाउट आइडियाज. इफ समबडी कम्स अप विद द आइडिया जो बिलीव करता है ग्रोथ में, है ना, तो आई थिंक दे आर द ग्रेट पीपल, आई वुड से. जो एवरेज लोग, जो बीच के लोग होते हैं, वो अपने बारे में अपनी तूती अपना गुणगान करते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये कर दिया. ऐसा बहुत लोग होते हैं, बहुत कम्युनिटी है. वो दूसरों को हमेशा यही बताएं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो उसको आता नहीं था, मैंने ये किया, वो लॉट ऑफ थिंग्स. मेरे आने से ये हो गया, मेरे आने से ये कर दिया, पहले ऐसा होता था, पैसा होता था, वो उसको ये नहीं करता था, वो गलत करता था, मैं सही कर दिया आगे. So these are the second lot of people who are average people, I would say. And then the lowest rung is the small people, basically. They talk about other people. That is what is gossip, basically, I'm talking about. They are the people who try to damage the others, actually, by talking ill about others and saying shoddy things about them. And that is how they damage the culture of people. They are the people who talk bad about the bosses also to others, right? They may or may not gain anything in person, but the only thing is they will try to diminish or try to damage the culture and try to damage the team spirit, I would say. So that is how things go. So बिल्कुल we बिल्कुल need सर। to avoid gossip. We need to say clear no to gossip, actually. That's important. बिल्कुल दोनों तरह के लोग होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जैसे कि सर बता रहे हैं कि लोग पॉलिटिक्स भी करते हैं, जेन्युइन लोग भी होते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। सो तभी एक बैलेंस बना रहता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, ताकि काम जो है वो बैलेंस तरीके से चलता रहे। सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बार बार आ रहा है कि एक बॉस को अपनी टीम के साथ में कितना फ्रेंडली होना चाहिए, उसे किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ऑफिस के अंदर, ताकि जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो बहुत हैपनिंग बना रहे। सो क्या कहना है आपका इसके बारे में? ये सवाल थोड़ा दोबारा पूछिए मेरे से एक बार. हाँ, सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक बॉस है जो अपनी टीम के साथ काफ़ी फ्रेंडली है, तो कितना मतलब किस लिमिट तक उनको फ्रेंडली होना चाहिए? किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए उनको? ताकि
जो ऑफिस का माहौल है वो हैपनिंग बना रहे। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है एक्चुअली। एंड इस सवाल के लिए आई वुड डेफिनेटली से आई मे लाइक टू डेवलप ऑन दिस इन डिटेल। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। Okay. I may like to develop on this at the upon the I mean depending upon the formation of team rather, right? There are small offices, there are large offices, there are working shop floor plants, factories. So there are different formations actually which have to be dealt differently. I mean, can be classified broadly into two ways, I would say. A relation between employee and a boss and families. अगर हम इसको इस तरह से ले, तो let me take it, one formation is formal and informal. I mean, and one school of thought says that try not to be best friends with your boss at individual level. You have plenty to lose, as any trouble in your personal relationship may land into office, And if you have personal problems with your boss, you are liable to suffer at work, right? It's important. जब आप बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे अगर हम आप अपने बॉस को अगर बेस्ट फ्रेंड समझने लग गए और उस तरह से बर्ताव करने लग जाते हैं, तो देर इज एवरी चांस एट इंडिविजुअल लेवल दैट यू आर प्लेंटी टू लूज। दिस इज माई टेक। एंड बिकॉज जैसे ही आपकी रिलेशनशिप में कुछ थोड़ा सा ट्रबल पर्सनल रिलेशनशिप में हुआ, तो टू लैंड अप इनटू योर ऑफिस and you're liable to suffer at work. It's a risky thing, I think. So neither the bosses should know too much about you, nor they should know, and nor they should worry that you know too much about them. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। बॉसेस को भी आपके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता होना चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि बॉसेस जो हैं वो भी उनको भी ये मालूम हो कि आपको उनके बारे में बहुत ज्यादा पता है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। एंड मेरे हिसाब से क्या है जो मैं सोचता हूँ, अगर टीम, आई सजेस्ट देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट सेज व्हाई नॉट बिल्ड a strong professional and personal relationship with your boss. Why not at individual level, but build up a professional and personal relationship, no? आई ऑलवेज, मैंने पहले भी बोला कि बॉसेस जो होते हैं बहुत अकेले होते हैं। दे आर इन आइसोलेशन, दे फील लोनलीनेस, but as and when they find someone who establishes a genuine connection and work with them, they always find it most rewarding. And this may help an employee to improve his own relationship with boss. ये ऐसा होता है जब आप एज ए बॉस आप महसूस करते हैं कि हाँ, एक कोई जेन्युइनली एक एम्प्लॉय जो है वो मेरे को ऐसे मदद कर सकता है, राइट? आप कैसे कोशिश कर सकते हैं, आप बॉस से नज़दीकी बनाने के लिए उसके कोई भी इंटरेस्ट एरिया में एक आप थोड़ा सा झांक के देख सकते हैं। उसको कौन सी बुक्स पसंद हैं, उसको कौन से गेम्स पसंद हैं, उसका इंटरेस्ट किस में है, एंड अपने आप को थोड़ा सा इक्विप करिए ना उस कन्वर्सेशन स्ट्राइक करने के लिए। बिकॉज वंस यू स्ट्राइक दैट कन्फर्मेशन, सो you invest time to build a relationship chemistry, and जी। eventually what you're gaining is trust of the boss. And I would say जो गेन करते हैं, आई वुड से इट्स ए रिलेशनल करेंसी। ये मैंने एक वर्ड अभी ज्वाइन कॉइन किया है, रिलेशनल करेंसी। when you build relationship, you add relationship change to your pocket, and vice versa. Means when you do negative things, you end up spending, your relation currency. जी। And if you keep on doing things like this, and you're, ऐसा भी होता है कि बहुत बार बॉस को लगता है कि जो आप काम कर रहे हो वो गलत है, नेगेटिव है, तो व्हाट होगा आने के बाद क्या है, यू विल फाइंड कि यू रन बिकम बैंकरप्ट, आपके पास वो रिलेशनल करेंसी जीरो हो गया। जी। So there is this is the area worth investing in your relationship with your boss and his key family members also. बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये बॉस है, बॉस की फैमिली मेंबर्स भी हैं, राइट? सो इट्स इम्पोर्टेंट टू एक्नॉलेज दैट, एंड it's worth investing in relationship with your key family members of the boss as well, and it does have a strong bearing on your relationship with boss. It is desirable
and to be both kind and respectful to your boss family members, and always try to connect with them in हम्म, appropriate manner, because it जी always helps. It always helps. And the quality of relationship, and it impacts on your success and failure, of course. So it's worth investing in. Another way of it doing is, I mean, if you permit me, I can share with you a small story also. जी There is सर, जी another सर. form, yeah. So there's an informal way of doing it. Uh, Especially in the places where the employees are from the lower rung. Suppose a factory formation is there, there's a shop floor, or there is a dealership, or where there are 10 to 15 employees basically who work for his boss. So in those cadres, so what you need is, you need to cultivate belongingness, right? So I suggest that why not to organize picnics, informal get-togethers, does develop camaraderie, and हम्म, belongingness in a team and a group. आर्मी पीपल क्या करते हैं, वो बड़ा खाना रखते हैं, व्हेन देर पोस्ट इन रिमोट. उनका क्या है, इफ यू गो टू सियाचिन, तो वहां पे वो किसके लिए काम लड़ते हैं, वो सब करते हैं. दे डू इट फॉर योर बॉस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हु इज द लीडर? द हम्म, इमीडिएट पर्सन इज द लीडर ओनली. सो वहां पे बड़ा खाना होता है, देयर से म्यूजिक, देयर से डांस, बॉन्डिंग, सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस इवेंट्स. एक फैक्ट्री है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, सारे रिकॉर्ड्स अचीव कर लेती है, रिकॉर्ड्स तोड़ देती है, नया करती है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए. मेरे को एक एग्जांपल याद है, जब मैं काम, आई वाज वर्किंग, आई मीन, आई रिमेंबर, आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर, आई विजिटेड ए डीलर, a हम्म, petroleum dealer. So this person, I asked the success ki your sales of your products are very high as compared to the uh, other ones. So he shared with me one model, his model. I mean, this unique model. He says, "Yeah, I've got about 15 to 20 guys working for me, and what I do is I give one LFA to the whole family member. I mean, all the family members of one person every year, एंड ईच फैमिली मेंबर नोज कि एक साल में एक हफ्ते का छुट्टी मिलेगा, उस पूरा फैमिली खाना पीना एवरीथिंग ऑन हॉलीडे जाएगा, आपकी चॉइसेस डेस्टिनेशन के ऊपर, राइट? यू गो टू हम्म, केरला, यू गो टू एनी प्लेस, ऑल खाना पीना रहना उनका, दिस इज बोन बाय द मालिक, द पर्सन हु इज द लीडर और बॉस. सो व्हाई नॉट द स्पाउसेस, जो लोग आपके लिए काम करते हैं, तो आई मीन दे डिराइव, आई मीन, ऑनर आउट ऑफ इट, And another way of doing it also is, he also used to, जब भी किसी ने extraordinary काम किया, तो he will conduct a small function, invite all the spouses, और जिसने सबसे अच्छा किया उसकी spouse को prize देता था, right? अच्छा. So that is how you enroll people. So that kind of friendliness is one way of connecting informally. But in the formal setup, I always endorse that you build a strong professional and a personal relationship with your boss. That is why. जी सर. सर, आपकी बुक अमेज़न पर लाइव है और बेस्ट सेलर हो चुकी है, तो किस तरह के फीडबैक मिल रहे हैं आपको अपनी बुक के लिए? Yeah, I'm a newcomer, I'm a learner now, I'm a beginner now. अभी मेरे को एक रिव्यू देखा है मैंने उस पे. I invite and request everybody to please give their genuine feedback to me. I would request constructive criticism, whatever it is, Mhm. because I mean, if I have to grow and go further, I need to have that critics from all of you. I request all my viewers to please read my book and give me their review and comments, genuine comments. It would be an honor for me. Because I definitely say, um, it would add smiles to my face. जी सर. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग पिछले 1 घंटे से सर के साथ डिस्कशन कर रहे हैं इस टॉपिक पर. सर इतने इम्पोर्टेंट टिप्स, इतने वैल्यूएबल टिप्स हमें दे रहे हैं. सो प्लीज़ इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये सिर्फ ना केवल आपकी कॉर्पोरेट, आपकी जो लाइफ है, कॉर्पोरेट आपकी जो करियर है, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, बल्कि आपके साथ में जो आपके कलीग्स हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होगा. बॉस के साथ आपको किस तरह का बिहेव करना चाहिए, इस तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर आपको बहुत ही जेन्युइन टिप्स आपको मिलेंगे. सो आई एम श्योर ये बुक आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी. इस बुक को पढ़िए, इसको परचेज कीजिए और अपनी फीडबैक्स, जेन्युइन फीडबैक्स इस बुक के लिए अमेज़न पे ज़रूर डालिएगा. सर, एनी फ्यूचर प्लान्स राइटिंग को लेकर के आपके?
ओह यस यस, ये मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया है। एक मेरे के लिए एक पर्दा सा खुल गया है। आई से सर्टेनली इट इज समथिंग दैट अर्लियर इट वाज lull before the storm. I mean, then the storm is over now. The first book published, so it was like a storm. So it has gone now. So it is over now. And now I see a clear rainbow very clearly, and would try to make a rainbow of 7 more books ranging from topics like transformation by evolving a journey beyond mind. I am Mm-hmm. doing some research on this. Second is going to be imbibing leadership as an acquired intrinsic value. I mean, this is another thought process I'm working on. I would like to do something on personalities makeover, like building a bridge, merging a contrast of introvert and extrovert personalities. I would also work on relationships, basically, the sensitivity and ways to nurture them. I found a lot of value in this. I've got a lot of thoughts on this as well. Another uh, aspect, the fifth one is grooming and developing self in changing environment. Sixth one is, of course, the happiness journey. I mean, I would definitely, this is my most favorite topic actually. And next, last is the healthy body, mind, and soul. So these are the 7 colors of rainbow who I have chosen for myself. Let me see how I do it and how far आई I एम श्योर, go. आई एम श्योर सर, जिस तरह से इस बुक को आपने बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, आपके जो फ्यूचर प्लान्स आप जैसे बता रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, टॉपिक्स आपने हमारे साथ शेयर किए, तो आई एम श्योर कि इस बुक के जैसे ही आने वाली बुक्स भी आपकी इतनी ही वैल्यूएबल होगी और इतना ही ज़्यादा नॉलेज इसमें होगी, तो ज़रूर हमें इससे फ़ायदा मिलेगा। सर, अगर हमारी ऑडियंस आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकती है? I mean, I have given my email ID. You can, they ओके। can connect me over email ID. ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भुवनेश जी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, इनके एक्सपीरियंसेस का लाभ उठाना चाहते हैं, इनकी बुक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो सर की जो वेबसाइट है ये आपके सामने फ्लैश हो रही है, आप इस पे सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनसे बातचीत कर सकते हैं। सर, एनी लास्ट वर्ड्स फॉर आवर ऑडियंस प्लीज? Yes, yes, certainly. I mean, definitely, ये this is very close to my heart. और जब मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत शिद्दत के साथ बोल रहा हूँ, ये मेरे दिल के words हैं. One should endeavor to approach excellence in whatever one does in life. I think this is very important. Number one. Number two, create and add value to lives of others. Number three, be a giver. Number four is add smiles. Five is have patience. Sixth is listen effectively, very, very important. And then next, last is be focused on vision and ready to collaborate. And the extreme last is to be a leader, not a boss. Become a leader, not a boss. That is my last message to the audience, and wish all of them, all of the viewers who have spent time with me today. I really am indebted to all of them. It's an honor for me to be here, and it's my privilege to thank. I feel really thankful to Adhyyan Books Group, Mr. थैंक यू Nitin सो Soni and Shalini and whole of your team. They have been very supportive. They have all through, I mean, very supportive. And God bless you and your team. Thank you. God bless everybody who is connected to me and who is connected today. I seek your blessings and thank you. मच। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हेयर और आपकी बुक को लॉन्च करने का मौका हमें देने के लिए। सो हम बहुत थैंकफुल हैं आपके, और आपकी नॉलेज और आपकी जो बुक है उसको हम ज़रूर पढ़ेंगे और ज़रूर से टिप्स लेंगे। थैंक्स फॉर कमिंग सर। थैंक यू। My pleasure. Thank you. सो फ्रेंड्स, सर के साथ साथ आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और अपने कमेंट्स के साथ हमारे साथ आप कनेक्ट हुए, अपने क्वेश्चंस पूछे, तो आई एम श्योर आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर भी मिले होंगे और बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी नई नई चीज़ें, नई नई टिप्स सर ने हमको दिए हैं। सो ये बुक बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही कहते हैं ना करंट टॉपिक के ऊपर है। सो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, ज़रूर इसके बारे में जानना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मेरा बस यही कहना है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम
हमें अपने काम को नहीं भूलना चाहिए, अपने काम का हमें 100% देना चाहिए। और इसके साथ-साथ में जो आपके काम का पैशन है, काम करने का जो पैशन है, वो ना सिर्फ़ आपको निखारता है, आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपकी एंट्री करवाता है, बल्कि साथ-साथ में जो आपकी स्किल्स है, आपकी वैल्यूज़ है, उनको भी बढ़ाता है। और अपनी एक्सीलेंस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट लाइफ़ में आपकी एक्सीलेंस ही काम आती है। और इस तरह से काम कीजिए, इतने परफेक्शन के साथ साथ काम कीजिए कि आपको कोई रिप्लेस ना कर सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे रही हूँ कि इस एक्सीलेंस के साथ काम कीजिए कि कोई आपको रिप्लेस ना कर सके। इस तरह से काम कीजिए, इतने परफेक्शंस के साथ काम कीजिए कि आपका जो काम है वो कोई और ना कर सके। सो इस तरह से अपनी स्किल को, अपने आप को डेवलप कीजिए। सो इन्हीं वर्ड्स के साथ आज के इस वर्चुअल बुक लॉन्च को मैं यही समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच।